ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا وحريصنا ورحيمنا محمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. Once a traveler was traveling. He came across some people, the locality, and the locals of that locality, they were consuming some food. Because this individual was a traveler, when he came across those locals, they made fun out of him. They said, "Who are you? We don't know you." He says, "I am a traveler. And yes, it's been days. And this individual, he would go weeks without consuming proper food and water." This traveler, he would survive for days on just eating grass. This traveler would survive for days and weeks upon just eating grass. For weeks, there is no proper consumption of proper food or drink. Now he's been traveling
He's been facing the hardship of his journey, the heat, the mushkilat, the hunger, etc. Now finally he has come across some locals, a town, and those locals, few people, in middle of the night, full of darkness, he's a traveler, an outsider. And when he is asked to introduce himself, he says, I am a traveler. So they start mocking him, that we don't know you. Where have you come from? And one of those locals, what he does, he picks up dried bread, dried roti, and he throws it at him. Dried roti, which is hard, you are all aware, dried roti, sakht roti, very crispy. As in the sense, not crispy as in delicious, no, very hard. Yes, it's very crunchy, but it's not delicious. It is outdated. It becomes very tough to bite on and to chew. They throw it at him, and some of those locals were consuming melons. Consuming melons, so what they do? After eating the melon, they throw the peels. Children, they throw the peels of the melon which they were consuming at this individual. So two things. He's a traveler. He's come across some locals. Middle of the night, darkness, he doesn't know anyone. And the whole night he's sitting next to them. And they are saying, who are you? They are bullying him, terrorizing him, mocking him, targeting him. Aajkal bhi aise hota hai. If there's someone outside we don't know, we do everything, not everyone, to make that person's life hell. We say, he's an outsider. He's not one of us. रिश्तों में भी ऐसा होता है. यही दुल्हन आए जो घर के वो यानी उस फैमिली से ना हो, तो उसके साथ जो लोग हम सलूक करते हैं, है कि नहीं है? फिर कहते हैं घर के माहौल ठीक नहीं है. If someone is treated like this, there's much as insan we can tolerate. But subhanallah, this great individual, he's been mocked all night. Melon peels are being thrown at him, launched at him. Dried bread has been thrown at him. Now this individual sat there all night doing shukr to Allah. Doing shukr to Allah, thanking Allah, Ya Allah, you have blessed me with this dried bread. You have blessed me with these peels of melon. Upon this I do your shukr. And in Kashful Mahjoob, that individual writes that upon every peel of that melon which was thrown at me, Allah subhanahu wa ta'ala opened the doors of spirituality for me. That individual, वो कहते हैं कि जब वो खरबूजे की जब वो फेंकते थे मेरी तरफ, उसका जो छिलका था, एक छिलका पड़ता, अल्लाह रूहानियत का दरवाजा खोल देता. This is in Kashful Mahjoob, and you know who that traveler was? Who sat there all night doing sabr and shukr? That traveler was no other than Huzur Data Sahib Rahimahullah. वो हस्ती कोई आम हस्ती नहीं थी. वो कह रहे कि मैं मुसाफिर हूं, तुम लोग मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें नहीं जानता. छिलके फेंके गए, रोटी फेंकी गई, बेइज्जत किया गया. वो सब्र करते रहे, शुक्र करते रहे. सब्र का इनाम फिर अल्लाह ने ये दिया
वो कहते हैं जब भी एक छिलका मेरी तरफ आता था उधर से रहमत का दरवाजा खोल दिया जाता था। Now we see there was a time 1,000 years ago when peels of melons were thrown at him. He was humiliated. उनको छिलके खरबूजे के उनकी तरफ फेंक दिए जाते थे। 1000 साल हो गया है, लाहौर में एक ही दाता है जो पूरे हिंद को खिलाता है। लाहौर में एक ही दाता है जो पूरे हिंद को खिलाता है। At time he was peels of melons were thrown at him. Now 24/7 पूरे पाकिस्तान में खालिश दूध मिले ना या ना मिले, दाता साहब तो खालिश दूध मिल जाएगा। ये पूछो गुजराती कौम उन्होंने उत्ते दाता साहब का बड़ा हिस्सा है। जी खैर, so this individual, he had patience. Now I will also relate a hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Aka Karim sallallahu alaihi wasallam mentions that individual who is patient upon the trials which come to him, an individual who is patient upon the trials and tribulations and afflictions that he faces. Allah subhanahu wa ta'ala says, हुजूर ने फरमाया कि जिस शख्स ने किसी मुसीबत पे सब्र किया जो उसको पहुंची किसी भी सूरत में, फिर अल्लाह फरमाता है उस शख्स को जिसने सब्र किया, सब्र का दामन ना छोड़ा। आजकल रो रहा है चुप करो तो तद भी फंसे, चुप ना करो मुझे किस पासे जा। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला says to that individual, दादा साहब रहमहुल्लाह ताला, he was humiliated. किसी ने सुटो हाँ खरबूजे का छिलका सुट के देखो हजार, या फिर ओ नहीं तो या तुसी नहीं, सही बात है। हाय हाय हाय। So Aka Karim alayhi salatu mentions one who is patient upon the trials and tribulations he faces. Allah says to that individual, Allah kya farmata hai? Allah says to him that it is not befitting my rahmah, it is not befitting my rahmah to hold this individual accountable on the day of judgment. This individual who faced trials and tribulations and he had sabr, he did shukr of Allah. Allah says it is not befitting my rahmah to hold him accountable on the day of judgment and to weigh his deeds on the mizan. Subhanallah, subhanallah. उसने फरमाया जिस शख्स ने मुसीबत पे सब्र किया उस शख्स को अल्लाह फरमाता है कि मेरी शान के लायक नहीं है कि वो बंदा जो दुनिया में सब्र करता रहा, शुक्र करता रहा, क़यामत के दिन उसके नामाए माल को तोलूं। That individual will be forgiven due to having patience on the trials and tribulations he faced in the dunya. क्योंकि वो मुसीबतों पे सब्र करता रहा, शुक्र करता रहा, सिर्फ इस नेकी के ऊपर अल्लाह क़यामत के दिन उसको जन्नत अता फरमा दे। हुज़ूर दादा साहब रहमहुल्लाह ताला, this individual, Ghazni, this is a place in Afghanistan, फिर हजवेर का इलाका है, हजवेर के साथ ताल्लुक है, हजवेरी। और आप हसनी हुसैनी सैयद हैं। क्या है? हसनी हुसैनी सैयद हैं। हज़रत दादा साहब रहमहुल्लाह ताला, he worked day and night for the deen. He stayed in Lahore for 30 years. 30 years. He served the people of Lahore almost 1,000 years ago. 1000 साल तकरीबन हो गया। आपका जो लाहौर के अंदर क़याम था 30 साल था। Before settling in Lahore,
Now these are the awliyaullah. He traveled to Iraq, he traveled to Libya, Lebanon, he traveled to Syria, Sham, Iraq, Lebanon, Sham, and many other countries. You know for what? Not as a tourist. आपको टूरिस्ट की कहानी बाद में सुनाऊंगा. He traveled to so many countries just to learn the knowledge of the deen. Today we travel to so many countries as a tourist to see the beauty of those countries. But he taught, he went around so many places and countries to seek the beautiful knowledge of the Quran and the ahadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And this is one of the signs of a friend of Allah, that he has knowledge of the deen. And yes, Hazrat Shaykh Abdul Qadir Jilani, Imamul Awliya, Gauss-e Pak, he was asked, that Ya Shaykh, when did you become aware that you are the friend of Allah? आपको कब इल्म हुआ कि आप अल्लाह के वली हैं? You know what he says? He says, the moment I set off from my house and I put my foot into the madrasa. He says, the moment I step into the madrasa where there were students of the deen, and he says, I saw angels welcoming me and moving the students that give path to the one who is Imamul Awliya. Give way to the path who is the friend of Allah. वो कहते हैं उस वक्त मुझे इल्म हुआ कि मैं अल्लाह का वली हूँ, अल्लाह को मुझसे प्यार है. मैं घर से चला, मैंने मदरसे में कदम रखा, मैं देखता हूँ इत्थे भी फरिश्ता है, इत्थे भी फरिश्ता है, आगे भी पीछे भी, और लोगों को कह रहे रास्ता बनाओ, ये शागिर्द नहीं दे, ये शागिर्द का उस्ताद आ रहा है, ये वली नहीं इमामुल औलिया आ रहा है. And even the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he says, "Man yuridillahu bihi khayran, yufaqihuhu fi din." That if Allah subhanahu wa ta'ala tends to do good with you, with any individual, yufaqihuhu fi din. Allah उसको कुरान का भी इल्म अता फरमाता है, मुस्तफा के फरमान का भी इल्म अता फरमाता है. So he went around seeking knowledge of the deen. And the Prophet ﷺ also mentions the one who sets out to seek the knowledge of the deen, the angels, the malaika. Who? The malaika, farishte. They lay their wings under the feet of the students of the deen. This is why Hazrat Ghaus Pak rahimahullah ta'ala, he says, when I entered the masjid, मैंने देखा मेरे आगे पाछे फरिश्ते इस्तिकबाल कर रहे हैं. Because this was the hadith of the Prophet alayhi salatu wassalam. Hazrat Dada Sahib rahimahullah ta'ala, he himself खुद भी वली थे और वलियों से प्यार करने वाले भी थे. आजकल ये भी बड़ा रोल है, मेरे मुरीद थोड़े को नहीं जाने थे, थोड़े की ख्याल है ऐसा है कि नहीं है? नहीं होना चाहिए. ये मेरी गद्दी है, इतने सिर्फ आप ही बैठ सकते हैं, मैं ही बैठा, कोई और नहीं. अल्लाह वालों का क्या है? अल्लाहु अकबर. You know what the Prophet sallallahu alaihi wasallam says? On the day of judgment, there shall be people who shall be granted the shade of the throne of Allah. कुछ लोग होंगे कि अल्लाह उनको अपने अर्श के साए ताले जगह अता करेगा. And amongst those people will be those people who loved each other for the sake of Allah. जो एक दूसरे से अल्लाह रसूल की वजह से प्यार करते थे.
हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन जहां नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई अपने पसीनों के अंदर डूब रहा है, इधर ये वो खुशकिस्मत लोग होंगे अल्लाह अर्श के साए तले वो पसीने च डूब रहे, ये अल्लाह दी रहमत दे दरिया च गोते लगा रहे हैं। Hazrat Data Sahib Rahimahullah Ta'ala, yes, where he was the friend of Allah, he was the wali of Allah, he also had the love of the other friends of Allah as well, the awliyaullah. He would visit the graves of the pious individuals. In fact, in Kashf Mahjub, he says that he once visited the grave of Hazrat Sayyidina Bilal. Oh Bilal Ba Kamal. He says he visited the grave of Hazrat Sayyidina Bilal, the Muazzin of Rasulullah. And he is Sayyidul Muazzinin. क़यामत के दिन ऐज़ान देने वालियों, हाजी जी, और क़यामत के दिन जो अज़ान दे, people who call the azan for the sake of Allah, आगे आगे बिलाल होवेगा, पीछे पीछे तुसी होवोगे. Hazrat Bilal will lead the muazzins into the Jannah on the day of judgment. So Hazrat Dada Sahib says, I visited the grave of Sayyidina Bilal. मैं पहुंचा, इधर आंख लगी. So he said, I was at the grave of Sayyidina Bilal radiyallahu ta'ala anhu, and he says, I had a vision. मुझे आंख में ज़ियारत हुई, किसकी? बिलाल की नहीं, बिलाल के नबी आमिना के लाल की. He said, I had a vision, and this is the face being given to Data Sahib by Hazrat Bilal. जो बिलाल के पास आए उसको रसूलुल्लाह की ज़ियारत होती है. So Data Sahib Rahimahullah says that I had that vision. I see the Prophet alayhi salatu wasalam, and you know the Aka Karim sallallahu alayhi wa sallam, he's holding this old man in his arms like a young baby, a little baby. वो कहते हैं कि मैंने ख्वाब में ये देखा कि रसूलुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बूढ़े शख्स को अपनी बाजू में उठाए रखा है जैसे किसी बच्चे को उठाते हैं. So Dada Sahib Rahimahullah Ta'ala says, when I saw this old man in the blessed arms of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he says, I was amazed. How great is this individual, this old man, that he is being held and picked by Rasulullah. And he goes, when I saw this, I ran towards the Prophet ﷺ, and I fell to the Prophet's feet and I kissed the Prophet's feet. वो कहते जब मैंने ये देखा कि हुजूर ने इस बूढ़े शख्स को अपने हाथों में उठाए रखा है, तो मुझे उसकी किस्मत पे रश्क भी आया. ये बड़ी बात है, हमने तो सुना था मेरे नबी ने हसन को उठाया, हुसैन को उठाया है, इधर आज इस बूढ़े शख्स को उठाए रखा. Who is this great individual? And Dada Sahib Rahimahullah Ta'ala, after falling and kissing the feet of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, अर्ज की थी, आका अगर मैं आला हज़रत की ज़ुबान तर्जुमा करा, तेरे कदमों में जो है, तेरे कदमों में जो है, गैर का मुंह क्या देखे, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलबा तेरा. So he says, Ya Rasulullah, who is this individual? And tawajjuh kariyo zara. So Hazrat Dada Sahib is at the grave of Sayyidina Bilal, and he has this vision that the Prophet ﷺ is holding this great old man in his arms, and Dada Sahib falls to the feet of the Prophet, kisses the Prophet's feet, and he says, Ya Rasulullah, who is he? इतना बड़ा मकाम आपने उठाए रखा. उसने पता क्या फरमाया? हनफियो, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam replies to Dada Sahib, do you know who this individual is? Ya Rasulullah, तुसी फरमाओ, करम फरमाओ, एक कौन है? Huzur says, this is Abu Hanifa, and this is your Imam.
फरमाया ये जो इस बूढ़े शख्स को मैंने उठाए रखा है ये अबू हनीफा है और तेरा इमाम है. And yes, one last point I would like to mention in regards to visiting the graves. Sayyidi Ala Hazrat Rahimahullah Ta'ala Fatawa Radwiya, keep this in mind. As Ahlul Sunnah wal Jama'ah, people accuse us of grave worship, worshipping the grave, prostrating and doing sajda to the graves. In Fatawa Radwiya, कहते हैं आला हजरत ने अजीब है ना सुनिया में दर्ज दिया तुसी आला हजरत ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੁਣ ਸੁਣਾਉਂਦਾ. He says, first of all, prostration is sajda to anyone with the intention of worship. Sajda to anyone. First of all, anyone, a living being, with the intention of worship. This is haram and shirk. किसी को भी सजदा इबादत करना ये शिरक है और haram hai. And then he says the sajda of respect, he says ye bhi गुनाह कबीरा है और haram hai. Someone who does sajda of respect, sajda ta'zimi, ye hai sunni. He says the intention of respect and doing sajda, this is also major sin and haram. And he says one who does any sajda of ta'zim to a grave, this is also haram. Hatta ke praying to Allah but facing the grave, this is also haram. सानू तो उन्हें ये आखे अगर कोई ऐसा करता है, if someone is ma'azallah doing sajda to the grave, if that individual is doing sajda with the intention of worship ma'azallah, na'udhu billahi min zalik, वो पक्का मुशरिक है. ये तो सुन्निया दे मिंबर तो सी दस रहे हैं, आला हजरत मन्नन वाले तो दस रहे हैं. अगर किसी ने इबादत की नीयत से किसी को भी किसी कब्र को सजदा किया, किसी शख्स को किया, वो पक्का मुशरिक है, काफिर है, उसके ऊपर कलमा पढ़ना दोबारा लाजिम है. वो काफिर हो गया, मुशरिक हो गया. एंड वन हु डूज द सजदा ऑफ रिस्पेक्ट, कि मैं इसका अदब करता हूं, लाइक द एंजल्स डूइंग द सजदा टू प्रॉफेट आदम अलैहि सलाम, वो उस वक्त जायज था, वो अल्लाह का हुक्म था. समझ आई बात? वो मसला और है. अब ये सजदा तज़ीम, so if anyone does sajda of respect to anyone, any grave, with the intention of respect, yes, he is not a polytheist, he is not a mushrik, but he has committed haram act, and he has committed a major sin. Repentance and tawbah is lazim for that individual. वरना कब्रों पे जाना, उनसे फैज लेना, पूछो गरीब नवाज से. He spent so many days and nights at the grave of Dada Sahab, and after being blessed, he says, Ganj bakshe faiz alam mazhar noore khuda. Ganj bakshe faiz alam mazhar noore khuda. नाकिसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा. कहता पंजाबी से तर्जुमा कर दिया, नाकिसां दा पीर कामिल कामिलां दा रहनुमा. पूछो अल्लामा इकबाल से. He says सैयद हजवेर मखदूम उमम, कि हर शख्स को दाता साहब के आगे सर को झुका देना चाहिए. This Englishman, he visits Lahore as a tourist. He visited Minar-e-Pakistan. He visited Badshah Masjid. और जबुर्जी भी गया. तो पता नहीं किथे किथे गया. He came back and he said, "Wow, you visited Lahore?" मैं कुछ और कहने लगा सर, चलो. He says, "Yes, I saw a lot of places." But he goes, there is one grave
He says there is one grave which rules over the hearts of millions and millions of people. कहता है मैंने सब कुछ देखा लेकिन एक कब्र देखी है, कब्र का ये हाल है। तो जब दाता साहब जिंदा थे उस वक्त क्या कमाल होगा। Because I see that the grave, वो कब्र लाखों करोड़ों लोगों के दिलों के ऊपर आज भी हुकूमत कर रही है। बड़ों बड़ों के वहां मजार हैं, बड़े बड़े बादशाहों के मजार हैं, लेकिन जो रौनक दाता साहब के पास है, तुसी किसी बड़े दे उत्थे दरवाजे ते जाओ, हो सकता है तुहानू कुछ ना लगे, दोपहर दे वेले जाओ, रात में जाओ, हलवा भी खाओ ते सब कुछ खाओ। ये है दाता साहब। जो मैंने कहा अल्लाह पाक समझ की अमल की तौफीक अता फरमाए। सुल्तान पढ़ लो। अल्लाह